Greetings from Southern California, USA. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जनूबी रियासत कैलिफोर्निया से आप सबकी सलामती हो। This is Dr. Reverend Eric Sarwar, Director of Tehillim School of Church Music and Worship, and I'm Dr. Stephen Brooks, Director of Worship Quest Ministries. So हम इस वक्त डॉक्टर स्टीवन ब्रुक्स जो कि वर्शिप क्वेस्ट एकेडमी के डायरेक्टर हैं और इसके साथ साथ मैं पादरी एरिक सर्वर जो तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। I'm so grateful for the fact that you have taken time out of your schedule to gather together to learn about worship. So हम इस बात के लिए खुदा के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि ना सिर्फ आपने वक्त निकाला है कि यहाँ पर जमा हों बल्कि आप मसीही इबादत के बारे में मजीद सीख सकें। Worship is so very important to our lives. इबादत हमारी जिंदगियों के लिए बहुत अहम है। This is because as we worship God, we are becoming more like Jesus. क्योंकि जब हम खुदावंद की प्रस्तुश में बढ़ते चले जाते हैं तो हम यीशु मसीह की सूरत पर ढलते चले जाते हैं। In Psalm 145, the great king and psalmist David says these words. So ज़बूर की किताब और ज़बूर नंबर 145 में बनी इस्राएल के बादशाह और खुदा के अजीम जो परस्तार थे दाऊद वो क्या कहते हैं? God is great and he is worthy of our praise. ज़बूर 145 की तीसरी आयत में लिखा है खुदावंद बुजुर्ग है और बेहद सिताइश के लायक है। That shows that God is a great, majestic, sovereign Lord. इसका मतलब यह है कि पहली बात जो है खुदावंद बुजुर्ग है। इसका मतलब ये बयान किया जाता है कि खुदावंद जो बहुत अजीम है, कादिर मुतलक है और उसकी ज़ात बयान से बाहर है। And because of who he is, because of his attributes, we are to worship him. और चूंकि हमें खुदा की ज़ात का ये मुकाशफा दिया गया है कि खुदा की ज़ात क्या है तो हमें ये दावत भी दी गई है कि हम उसके लायक सताइश कर सकें। And furthermore, we are to praise him for all that he has done. और जो कुछ उसने हमारे लिए किया है उसके लिए हम उसकी सताइश कर सकें। And this worship and praise goes beyond just music. और ये जो इबादत है, सताइश है, ये सिर्फ मौसीकी नहीं है, ये इससे कहीं बढ़ के है। And that's why the Apostle Paul in Romans 12 says that we are to offer God living sacrifices. इसलिए पौलुस रसूल रोमियो के खत 12वें बाब में कहते हैं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने की नजर करो जो खुदा के नजदीक पसंदीदा है। Worship is every response that we give to God because of who he is. क्योंकि खुदा की ज़ात का जो मुकाशफा हमें मिला है, इबादत दरअसल उस मुकाशफे का रद्द अमल है, उसका जवाब है। I want to tell you a little bit about Worship Quest Academy. तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि वर्शिप क्वेस्ट एकेडमी क्या है। This is a 5-month training program. ये 5 महीने का तरबियती प्रोग्राम है And it's available in Urdu in Pakistan. और खुशखबरी ये है कि ये पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में ऑलरेडी मौजूद है। We are going to begin our next cohort in the fall. और कमिंग साल के फॉल में यानी अक्टूबर नवंबर से आप इसकी नए कोहोर्ट को शुरू होते हुए देखेंगे। So if you would like to expand your learning about worship beyond just this one-day workshop, So अगर आप अपने इबादत की तालीम को, उसके इल्म को और उसके सिनेरियो को बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ एक दिन से बढ़कर मजीद सीखना चाहते हैं, you can begin by enrolling in Worship Quest Academy and learning online. तो आपके लिए मौका होगा कि आप हमारे आने वाले नेक्स्ट जो कोर्स है उसमें आप अपने आप को एनरोल करें ताकि आप इबादत के बारे में मजीद जान सकें। And then we conclude our online learning with an in-person retreat that will happen in the spring of 2024. और फिर सन 2024 का जब मौसम बहार आएगा फरवरी या मार्च के महीने में आप सारे जो चीज़ें ऑनलाइन सीखेंगे उसकी फिर इन पर्सन रिट्रीट की जाएगी पाकिस्तान की किसी भी एक जगह पर। If you would like to learn more about Worship Quest Academy, you can go to our website. अगर आप वर्शिप क्वेस्ट एकेडमी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। You can find that at worshipquest.net. और ये worshipquest.net के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। And you can talk with Pastor Shaukat Masih about the program. और आप पास्टर शौकत मसीह जो आज के प्रोग्राम के होस्ट हैं, पास्टर शौकत मसीह ने ऑलरेडी वर्शिप क्वेस्ट एकेडमी का 5 महीने का कोर्स मुकम्मल किया है और वो आपकी मजीद रहनुमाई कर सकते हैं। He will be able to help you enroll when the time comes. तो जब वक्त आएगा, जब अनाउंसमेंट होगी तो पास्टर शौकत मसीह के जरिए से आप उस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। Again, thank you for being here today. आज शाम के लिए और आपकी आमद के लिए बहुत शुक्रिया। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। Amen.